Well, hello class. I hope you all are in good health. आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे about the mechanism of inspiration and then exchange of gases, transportation of gases. Okay? तो हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर में जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे रेस्पिरेशन उसी को आज कंटिन्यू करेंगे. प्रोबेबली ये लास्ट लेक्चर होगा in the respiration section and then we will move on. Great. So far हमने क्या देखा है इस respiration में? We have seen the respiration in plants and then unicellular animals. We have seen the respiratory organs, different respiratory organs. Okay. We have also seen the respiratory system of human. Okay. So human में respiratory surface में we have seen the nostril and then nasal passage, then nasopharynx, pharynx, larynx, trachea, bronchi, okay, primary bronchi, secondary, tertiary, terminal duct, alveoli. ठीक है. तो हमने देखा था कि एयर कैसे जाता है, okay, from atmosphere into your lungs और फिर कैसे उसी रास्ते से वापस आता है, right? Great. वहां पे हम लोगों ने देखा था एक प्रोसेस कॉल्ड inspiration. Okay, we have seen the process of inspiration या इसी को हम लोग कहते हैं inhalation. ओके और सेकंड एक चीज देखा था जिसको हमने कहा था expiration और exhalation. ठीक है, हमने ये देखा था कि inhalation is breathing in, that is taking the air from atmosphere inside the body is called inhalation. Exhalation is removal of CO2 rich air outside the body into the environment is called exhalation. और इन दोनों को मिला करके हमने क्या कहा था? breathing, है ना. चलिए थोड़ा सा और लिख लेते हैं. inhalation को ही हम क्या कर रहे हैं? it is breathe in और ये क्या है? breathe out. करेक्ट. और ये दोनों मिल करके क्या बनता है? ब्रीदिंग. ठीक है, दैट इज वन ब्रीदिंग साइकिल. सो एक ब्रीदिंग साइकिल में आपका सांस लेते भी हो और आप छोड़ते भी हो, दैट इज ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, बोथ कंबाइंडली कॉल्ड वन ब्रेथ, है ना. तो एक ब्रेथ का मतलब हुआ इंस्पिरेशन, वन इंस्पिरेशन एंड वन एक्सपिरेशन. ठीक है, कितना समय लगता है इसमें? सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग. सो ब्रीदिंग रेट, what is the normal breathing rate of humans? Humans का normal breathing rate जो होता है it is about 12 breaths per minute. Okay, so एक मिनट में हम लोग 12 बार सांस लेते हैं और 12 बार सांस छोड़ते हैं. 12 breathe in, 12 breathe out, 12 inhalation, 12 exhalation. Okay, great. Now question. Okay, अगर एक मिनट में we breathe 12 times, then what is the time required for one breathe? Well, very easy, right? कितना होगा? 60 by 12, that is 5 seconds, है ना. क्योंकि एक मिनट में 60 seconds हो गया ना, और 60 seconds में 12 times आप breathing कर रहे हो, तो कितना हो गया टोटल टाइम? 5 seconds per breath. Okay, now if you take on an average 5 seconds per breath, okay, how much time is required for one inhalation and how much for one exhalation? ठीक है. Now आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे अगर 5 seconds है तो 2.5 seconds for inhalation and 2.5 seconds for exhalation. Remember, it is biology. Okay, it is not necessary कि दोनों processes equal time लें. Okay, यहाँ पे क्या होता है? चलिए देखते हैं हम लोग. In one breath, one single inhalation takes around 3 seconds. 3 seconds for one inhalation. Okay, and 2 seconds for one exhalation. Okay, total 5 seconds per breathe. Out of that 5, 3 seconds is required for inhalation and only 2 for exhalation. So more time is required to inhale air.
याद रहेगा, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, आप इसको फील कर सकते हो. व्हेन यू ब्रीथ इन इट विल टेक मोर टाइम, छोड़ने में relatively it takes less time. Okay, so inhalation, exhalation, the time duration, you know it. Great, let's move on. Well, so let us see कि inhalation होता कैसे है, right? What is the mechanism of inhalation? How the air moves from outside, that is from atmosphere, into your lungs, rather into your alveoli. जाता कैसे है, correct? अब देखो होता क्या है, it happens because of pressure difference. Okay, so the air moves inside your body, that is inhalation. The process of inhalation or exhalation occurs because of pressure difference, है ना. अब प्रेशर डिफरेंस देखो, आप लोग जानते हो एयर प्रेशर, है ना. जैसे कि बलून में आपने ज्यादा हवा भर दिया तो बलून के अंदर का एयर प्रेशर क्या है, ज्यादा है. ओके, अगर आप उसको खोल दिए तो एयर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो हवा निकल जाती है. ठीक, अब देखिए, यानी कि एयर जो है विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. इसमें किसी को डाउट है? आई होप नॉट. So air always flow from a higher pressure to lower pressure. ठीक, यानी कि जहां पे एयर ज्यादा प्रेशर पे है वहां से कम प्रेशर वाली जगह पे हवा ऑटोमेटिकली फ्लो करती है, इसके लिए उसको किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है. ओके, ग्रेट. चलिए अब हम देखते हैं कि हो क्या रहा है. अब देखो हमें क्या चाहिए कि दिस वाज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. लेट मी ड्रॉ इट. Well, so if we look at the human respiratory system, we find something like this, correct? और इसमें हमने क्या देखा था? We have seen that the flow of air, right? Flow of air is like this. If you follow the green line, correct, and reaching up to the alveoli. Let me zoom it for you. So this was the flow of air, correct? So air is going this way from the nostril to the nasal cavity, finally through the pharynx, from the larynx, then trachea, bronchi, and finally reaching up to the alveoli. Correct? This was the pathway. This we have seen in the previous lecture. Okay? Now, what we have also seen in the previous lecture is this whole thing is in the thoracic cavity, correct? This whole thing was in thoracic cavity. Let me make it here again for you. Well, so we have seen that this cavity is called thoracic cavity. Great. Now, if you see, it is a sealed cavity, correct? It is a sealed cavity which has only one opening, that is through nose or through mouth, correct? So this was the, again this was a cavity, here it was opening. Okay, so this thoracic cavity has only opening into the outside environment either through nose or through mouth, correct? So it acts as a sealed chamber, right? And in the sealed chamber there are these two lungs which act as a balloon. So consider lungs as a balloon. Now in resting condition, the space, this thoracic cavity space, is at the normal pressure, right? So the pressure inside your thoracic cavity, inside your lungs and outside the environment is same, correct? Now what happens? Now you know that the pressure, okay, the pressure is proportional to area or volume. What is pressure? Pressure is force upon area. This I hope you all know, correct? Now in case of air, air is not measured in area, right? It is in volume. So for air pressure, it is force upon volume
correct? If there is more air in a small volume, the pressure will be higher. If there is lesser amount of air in a bigger volume, the pressure will be low. This is very simple, right? I hope आप सब लोगों को समझ में आ रहा है. जैसे कि एक बड़ी सी एक जगह है ना, उसमें अगर आपने थोड़ा सा एयर डाला है, कम एयर है, तो उसका प्रेशर कम होगा. अगर उसमें और ज्यादा प्रेशर में और ज्यादा एयर भर दोगे तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा. फर्दर और अगर एयर बढ़ाओगे तो और प्रेशर बढ़ेगा. जस्ट एज इन बलून. बलून में देखिए, व्हेन यू ब्लो अ बलून, एक टाइम आता है जब बलून का मैक्सिमम वॉल्यूम रीच हो जाता है. उसके बाद भी अगर आप उसमें हवा भरते हो, ठीक है, तो अंदर का एयर प्रेशर और इंक्रीज होता है, और बलून जब उस एयर प्रेशर को नहीं सस्टेन कर पाता है तो फट जाता है, राइट? इट बर्स्ट्स. सो यू कैन कोरिलेट विद द बलून. सिमिलरली यहाँ पे भी होता है. मोटो क्या है यहाँ पे, एक चीज समझिए कि जो एयर प्रेशर है वो डिपेंड करता है दो चीज पे, अमाउंट ऑफ एयर एंड सेकेंडली वॉल्यूम. ठीक है? अगर कम वॉल्यूम में ज्यादा एयर है तो प्रेशर अधिक है, अगर वॉल्यूम का अधिक है, एयर का अमाउंट कम है, तो प्रेशर कम है. ग्रेट. चलिए अब एक तीसरा कंडीशन लीजिए. मान लीजिए कि एक वेसल है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वेसल लेता हूँ. लेट मी मेक इट. सपोज आई हैव अ जार हियर. Okay, so we have this jar, okay, and this is a special jar. Why? Because at the end of this jar we have a rubber membrane. We have a rubber membrane and it is sealed so that air cannot leak out of it. Okay, so air cannot leak from this. Let me zoom in here. Correct? Now what I have done is I have sealed this opening as well, because this was the only opening through which air could come in or go out. Okay? So we have sealed it. Now in normal condition there was air in this, okay, and this air was at a pressure of 1 atm, 1 atmospheric pressure. Correct? Now what will happen? Suppose I pulled this membrane downwards. I pull this membrane downward. What will happen? If I pull it, now the membrane will come at this stage. So what will happen? In this jar, if you see closely, the jar volume was initially this much, correct? But now this jar volume has increased by this much volume. Correct or not? So this much volume has been added to the jar volume. So overall volume has increased. So if you compare from the previous situation, now there is more volume but same amount of air. So relatively the density of air will decrease or have decreased. As a result, the overall pressure has also decreased. Correct? So if a closed container's volume is increased, then the air pressure inside that container will decrease. If the volume of that container is decreased, the air pressure will increase. है ना? क्यों? देखिए आप प्रेशर में आपने यही लिखा था ना, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ है ना, प्रेशर फोर्स अपॉन वॉल्यूम. ठीक है? तो यहाँ पे वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो इफ वॉल्यूम विल इंक्रीज, द प्रेशर विल डिक्रीज. इफ वॉल्यूम विल डिक्रीज, प्रेशर विल इंक्रीज. राइट? तो यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. क्यों है? यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर वॉल्यूम आपने इंक्रीज किया, देन देयर विल बी मोर स्पेस but with the same amount of air. So the relative density of the air inside the jar or inside this container will decrease. As a result, the pressure will also decrease. If you decrease the volume, the density of air molecules will increase and so will be the pressure. Correct? Great. Chaliye. So
if you pull this, let me redo it. Okay, so if you pull this membrane down in such a system, then the pressure inside will decrease. Okay, if you leave this again back, okay, पहले आपने क्या किया था, membrane को नीचे खींचा था. If you again leave it, the membrane will go back, the volume will decrease and the air pressure will increase, right? You can do this experiment. Okay, you can design an experiment to see this effect on your own at home. क्या कीजिए आप, let me show you here. You take such a container, okay, जिसके की एंड पे क्या लगा हो, एक मेम्ब्रेन लगा हो, यूजुअली इलास्टिक लगी हो और ये एयर टाइट हो. नाउ व्हाट यू डू इज, यहाँ पे एक आप बलून लगा दीजिए, एयर टाइट कंटेनर में एक आप बलून लगा दीजिए. ओके, ग्रेट. नाउ बलून के अंदर का प्रेशर उतना ही होगा जितना बाहर का प्रेशर है, ठीक है, और बाहर का प्रेशर अगर आप चेंज करोगे तो बलून के अंदर का भी प्रेशर चेंज होगा, राइट? और अगर प्रेशर चेंज होगा तो बलून का वॉल्यूम चेंज होगा, आपको दिखाई देगा. लेट अस सी कैसे. सपोज इन दिस कंडीशन यू आर गोइंग टू पुल दिस मेम्ब्रेन डाउन. अगर आपने मेम्ब्रेन नीचे खींचा तो जो वॉल्यूम है कंटेनर का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज. अगर यहाँ का प्रेशर डिक्रीज होगा तो अब क्या होगा, द एयर फ्रॉम आउटसाइड, ओके, बाहर तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, एनवायरनमेंट में आपके एटमॉस्फेयर में जो एयर का प्रेशर है दैट इज 1 atm. यहाँ पे भी 1 atm था इनिशियली, बट सिंस यू पुल्ड द मेम्ब्रेन द प्रेशर हैव डिक्रीज्ड, यानी कि 1 atm से अब ये क्या हो गया, कम हो गया. तो अब 1 atm से कम हो गया तो बाहर से जो एयर है दैट विल ट्राई टू कम इन, क्योंकि बाहर 1 atm है और यहाँ पे कम है, बाहर प्रेशर अधिक है, अंदर प्रेशर कम है. सो एयर विल फ्लो इन, और जब एयर अंदर आएगा तो उसकी वजह से बलून का जो वॉल्यूम है विल इंक्रीज, करेक्ट. सो बलून में गेट इन्फ्लेटेड, ठीक है. अगेन अगर आप इसको वापस से छोड़ दोगे, इफ यू विल रिलीज दिस मेम्ब्रेन, तो ये वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन पे जाएगा. अब यहाँ का भी प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 atm. यहाँ का भी प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 atm. और जैसे ही 1 atm होगा तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एयर आया था उसकी वजह से बलून में प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पुश करेगा. तो अब एयर बाहर चला जाएगा और वापस से बलून अपने ओरिजिनल स्टेट पे, ओरिजिनल वॉल्यूम पे आ जाएगा. समझ में आया? सो दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन डिजाइन एट योर होम एंड कैन सी. नाउ सिमिलर टू दिस इज योर respiratory system. Okay, if you look at your respiratory system or respiratory system of a human being, this entire thoracic cavity is like that outer jar having a membrane. Okay, membrane at the end. जहां पे हमने रबर का मेम्ब्रेन लगाया था, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में डायफ्राम होता है. Okay, it is like that rubber membrane, and instead of that one balloon you have 2 balloons, that is your lungs. Okay, so when the diaphragm is pulled, okay, when the diaphragm is pulled down, okay, जैसे ही डायफ्राम को आप नीचे खींचोगे तो डायफ्राम अब कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे सपोज करो. ओके, उसकी वजह से ओवरऑल एरिया या वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी विल इंक्रीज, द प्रेशर इनसाइड विल डिक्रीज. जैसे ही यहाँ का प्रेशर डिक्रीज करेगा अब क्या होगा, बाहर से जो एयर है दैट विल रश इन. ओके, सो द एयर विल रश इन टू द लंग्स. तो लंग्स में आकर के एयर क्या हो जाएगा, फिल कर जाएगा. दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन इज कंप्लीटेड. ओके, नाउ let me tell you one more thing. The volume of thoracic cavity
can not only be increased by pulling the diaphragm down, okay, we can also increase it by pulling the rib cage, okay, by pulling the rib cage outward and upward. So अगर हम आप rib cage को बाहर और ऊपर की तरफ खींचे, है ना, और साथ में डायफ्राम को नीचे की तरफ खींचे, है ना, तो ऊपर से भी ऊपर चला गया थोड़ा सा और नीचे से भी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो ओवरऑल थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो एयर प्रेशर है इसके अंदर वो ज्यादा डिक्रीज होगा। और अब जब थोरैसिक कैविटी के अंदर का प्रेशर कम हो गया तो लंग्स के अंदर का भी प्रेशर कम हो गया, तो एल्वियोली का भी प्रेशर कम हो गया। अब जब एल्वियोली के अंदर का एयर का प्रेशर कम है और बाहर का एयर का प्रेशर अधिक है, तो क्या होगा, एयर विल फ्लो थ्रू दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम इनटू द एल्वियोली, यानी कि इंस्पिरेशन अपने आप हो जाएगा, करेक्ट। सो लेट अस सी, सो इंस्पिरेशन, okay, yeah, inhalation, okay, we were talking about inhalation. Inhalation कब होगा, if the pH diaphragm contracts, okay, अगर diaphragm contract करेगा then it will come down, okay, and inspiration will occur if the diaphragm contracts and the intercostal muscles contract, ओके, तो क्या होगा, इनहेलेशन होगा। यानी कि इनहेलेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, इनहेलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स। क्यों, when the diaphragm contracts, okay, when the diaphragm contracts it will pull the diaphragm down, but when the intercostal muscles will contract it will pull the rib cage outward and upward, तो ऊपर और बाहर की तरफ खींचता है ये। Okay, now second question you can ask is what is intercostal muscle? So intercostal muscles are the muscles present between two ribs. याद कीजिए पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ऐसे रिब केज है, दिस इज वन रिब, ओके, जो कि स्टर्नम से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ओके, सिमिलरली ये ऐसे यहाँ पे एक दूसरा रिब भी है, करेक्ट। So there are these two ribs and in between these two ribs there are muscles, okay, there are muscles and these muscles are called intercostal muscles. When these muscles will contract तो इन दो रिब केज के बीच की दूरी कम होगी और ये ऊपर और बाहर की तरफ जो पूरा का पूरा ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर है आपका रिब केज, okay, let me show you here. So you have this रिब केज लाइक स्ट्रक्चर जहां पे कि यहाँ पे रिब्स हैं, ओके, ये पूरा का पूरा जो केज लाइक स्ट्रक्चर है आपका, दिस केज विल बी पुल्ड अपवर्ड एंड आउटवर्ड, तो उसकी वजह से आपका जो थोरैसिक कैविटी है उसका पूरा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलिए, सो इंस्पिरेशन के लिए व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। उससे क्या होता है, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, एज अ रिजल्ट द एयर विल फ्लो फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द लंग्स, दैट इज इंस्पिरेशन और इनहेलेशन। सिमिलरली एक्सहेलेशन कब होगा, एक्सहेलेशन जब आपका वापस से ये जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड है अगर ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे आएगा और इंटरकोस्टल मसल्स भी जब रिलैक्स करेंगी तो अगेन थोरैसिक कैविटी वॉल्यूम विल कम बैक टू इट्स नॉर्मल साइज, ओके, यानी कि टोटल वॉल्यूम विल अगेन डिक्रीज बैक टू नॉर्मल, एयर प्रेशर विल इंक्रीज। क्यों, क्योंकि एयर तो एक्स्ट्रा आके भर गई है और वापस से वॉल्यूम नॉर्मल पे आ गया यानी कि कम हो गया, तो अब जो एक्स्ट्रा एयर आई थी उसकी वजह से अब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा एंड बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर इनटू द लंग्स विल बी रिमूव्ड, ओके, दैट विल मूव आउट ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड exhalation. So the process will exhalation occurs because of relaxation of diaphragm and intercostal muscles.
Okay, याद रहेगा. Great. So what is the mechanism of inhalation and exhalation? The process of inhalation and exhalation occurs because of pressure difference, air pressure difference between the air pressure in the lungs and air pressure in the atmosphere. Okay, great. How this pressure difference is created? This pressure difference is created by altering the volume of thoracic cavity. And how this is altered? This is altered by contraction of diaphragm and intercostal muscles. Okay, when the diaphragm and intercostal muscles contract, the overall volume of thoracic cavity increases and air rushes in the lungs. Okay, that is inhalation will occur. When the intercostal muscle and diaphragm relaxes, the thoracic cavity volume comes back to normal, the air pressure increases. As a result, the air is forced out of the lungs into the environment. That is the process of exhalation occurs. Okay, ठीक है. सो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं ये दो मसल्स, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक है, जब ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनहेलेशन होगा, जब रिलैक्स करेंगे तो एक्सहेलेशन होगा. ओके, नाउ द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज एन एक्टिव प्रोसेस. मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी लगती है. ठीक है, इसीलिए इनहेलेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. हाउएवर एक्सहेलेशन के लिए क्या चाहिए? रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, और रिलैक्सेशन में कोई भी एनर्जी का जरूरत नहीं होता है. नो एटीपी इज यूज्ड. हेंस expiration or exhalation is a passive process in human beings. Okay, I hope आप लोग को समझ में आ रहा है the process of inhalation and exhalation. ठीक है, किस मसल्स की वजह से होता है ये भी आपको समझ में आ रहा है. Great. Now once the air, fresh air reaches into the lung alveoli, तब क्या होता है? Okay, so let me draw an alveoli first. So see, okay, so let's assume that this is alveoli. Okay, now in the alveoli the fresh air comes in by the process of inhalation. Okay, so inhalation occurs and as a result O2 rich air, okay, enter into the alveoli. So this is alveoli. Once this comes in the alveoli, great. Now this alveoli is lined by, so outside this alveoli there are a lot of blood vessels. Okay, so alveoli is highly vascularized. It means that there are a lot of blood vessels around the alveoli. So each alveoli is actually covered by a network of blood vessels which are known as pulmonary capillary. Okay, capillaries. So each alveoli is covered by, so there will be many capillary networks covering the whole surface of alveoli from outside. Great. For understanding, we have taken one alveoli. So this is one alveoli. Now from this side, blue side comes in the impure blood. Okay, and you know that in impure blood oxygen is less and CO2 is more. It is carbon dioxide rich blood and hence we call it impure. Correct. Now in this blood, this blue blood which is rich in CO2, okay, the CO2 is more than which is present in the alveolar air. So in alveoli, the air that we have inhaled is rich in O2 and has less concentration of CO2, but the blood, impure blood, has more CO2. So what will happen? The CO2 will go into the alveolar air. Okay, and in this air there is more O2, so O2 will come into the blood. Great. Now once this blood
Okay, from this blood CO2 goes into alveoli and oxygen comes into the blood. Now this blood is rich in oxygen, okay, and we call it purified blood or pure blood, right? And this blood leaves on the other side. So this is pure blood or oxygenated blood, right? I hope you all know the oxygen rich pure blood is called oxygenated blood and CO2 rich blood is called deoxygenated blood or impure blood, right? So can you see in the alveoli, what is happening is the oxygen, the fresh air that we have taken from the atmosphere has more oxygen and less CO2, but the impure blood has more CO2 and less oxygen. So what will happen? CO2 comes out of the blood and goes into the alveoli, whereas the O2 from alveoli moves into the blood. Now this movement is occurring solely on the basis of concentration gradient, है ना? CO2 का concentration यहाँ पे high था, यहाँ पे low था, इसीलिए CO2 high to low concentration में चला गया. alveoli में जो air है उसमें O2 अधिक था, blood में कम था, इसीलिए alveoli से blood में O2 आ गया. Now this movement is simply on the basis of pressure, on the basis of concentration difference, है ना? इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? It is a type of diffusion. याद कीजिए diffusion क्या होता है? The movement of molecules on the basis of their concentration difference. इसको हम क्या कहते हैं? Diffusion. So gases diffuse. Okay, CO2 diffuses out, right? So CO2 diffuses out from blood into alveoli, okay, whereas O2 diffuses in from alveoli, diffuses in, let me write in another way. So O2 diffuses into the blood from alveoli. Okay, so O2 is coming in and CO2 is going out. So what will happen eventually? Eventually, the air in alveoli will become rich in CO2 and the amount of O2 will decrease. Great. So after diffusion, the alveolar air becomes CO2 rich. And then this CO2 rich air is expelled out by a process called exhalation. And that's why we have seen that when you exhale air into lime water, the lime water has turned milky. Why? Because it was rich in CO2. This CO2 actually came from the CO2 present in the impure blood. Great. So this is how it happens. Now, how the transport happens. Okay, let me show you here. So when you take a blood vessel, I am taking a big blood vessel here. Okay, now in this blood vessel there are RBCs, that is red blood cells, okay, plus there are also some WBCs which are amoeboidal cells. Okay, there will be also some platelets which will be orbit shaped, no nucleus. Great. So there will be some platelets and there will be a lot of plasma, liquid. Okay, that is plasma. Great. So this all is plasma. Now what happens is the CO2, okay, CO2 is transported mainly in dissolved state, okay, in plasma. Okay, so well, so if we talk about transportation of CO2, we find that most of the CO2, okay, most of the CO2 is transported in dissolved state, okay, in dissolved state
in the bicarbonate ion form, okay, in the bicarbonate ion form. Okay, so what happens when there is CO2? This CO2 reacts with water. Okay, this CO2 reacts with water present in blood and it forms H2CO3. This is carbonic acid, and then this carbonic acid dissociates to form HCO3 minus, that is bicarbonate ion. Now this bicarbonate ion, okay, plus H plus, now this bicarbonate ion remains dissolved in the blood plasma, okay, and in this bicarbonate ion form, most of the CO2 is transported between the tissues and lungs. Okay, so in between tissues and lungs, the CO2 is mainly transported in the form of bicarbonate ion. याद रहेगा, प्लीज याद रखिएगा आप इस बात को, is transported in the bicarbonate ion form. Okay, however, around 10 to 15%, okay, around 10 to 15%. So 85 to 90% तो इस फॉर्म से होता है. Around 15% of CO2 is transported in the form of carbyl amino hemoglobin. Okay, HB is for hemoglobin. Now what is this? Actually, when CO2 binds with hemoglobin, we call it carbyl amino hemoglobin. Okay, so around 15% of the CO2 enters into the RBC and it binds with the hemoglobin to form carbyl amino hemoglobin. Great. So when we are talking of CO2, most of the CO2 is transported in the form of bicarbonate ion, while some of the CO2 is transported in the form of carbyl amino hemoglobin. Okay, great. Let us see how oxygen is transported in blood. Well, so transportation of O2, oxygen. When we see, most of the oxygen binds with hemoglobin to form oxyhemoglobin. Okay, to form oxyhemoglobin, and this oxyhemoglobin will again be present where? Inside the RBC. So around 97% of oxygen is transported by the RBCs and hemoglobin inside it in the form of oxyhemoglobin. Okay, only about 90, so this is about 97%. Only about 3%, so about 3% of O2 is transported, okay, as dissolved gas. So transported in dissolved form in the plasma. Okay, so most of the oxygen is carried in the form of oxyhemoglobin by the RBCs, okay, while only 3%, a very minor fraction, is transported as a gas form which is dissolved in the plasma. Okay, it is not bound to any molecule. It is simply dissolved in the blood plasma. Well, now this transportation of CO2 and O2 is happening in between the tissue and the lungs. Okay, so in the lungs, when oxygen is coming into the blood, it binds with the hemoglobin, form the oxyhemoglobin, okay, and then it goes all through the body. When it reaches the tissue, inside the tissue, this oxyhemoglobin splits to release oxygen. Oxygen goes into the cell and CO2 is taken from the cell. Now this CO2 will come into the blood and form the bicarbonate ion or carbyl amino hemoglobin. Again, this blood will take the CO2 back to the lungs. In lungs now, CO2 will be exchanged. Okay, oxygen will be taken in and again oxyhemoglobin is formed. And this cycle keeps on going into the body. Okay, this is how the gases are exchanged in your lungs.
and transported through the blood from the lungs to all the tissues or cells of your body. Okay, great. So this was mechanism of inspiration, expiration, and transportation of gases in human respiratory system. Great. Now, since we are a complex organism, right? Humans are complex advanced organisms. Now, in case of complex advanced organisms like humans or other mammals, okay, or for that example chordates, which are multicellular, the requirement of oxygen is higher, okay, and to meet this we need to have a larger respiratory surface, right? So we need to have a larger respiratory surface so that a lot of gaseous exchange can occur in no time. Great. समझ में आ रहा आपको? देखो आप सेकंड्स में ब्रीद इन कर रहे हो तो विद इन सेकेंड्स आपका गैसियस एक्सचेंज हो रहा है और उस सेकंड में इतना गैसियस एक्सचेंज होना चाहिए दैट शुड मीट द डिमांड ऑफ ऑल द बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स ऑफ योर बॉडी, राइट? सो इसके लिए आप टाइम ड्यूरेशन नहीं बढ़ा सकते तो आप क्या कर सकते हो? रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया बढ़ा सकते हो, है ना? एंड देयरफॉर all the respiratory organs have very large surface area. Okay, now just as a fact, जो ह्यूमन लंग्स हैं, ओके, ह्यूमन लंग्स के अंदर जो एल्वियोली हैं, अगर सारे एल्वियोली को लेकर के आप स्प्रेड करोगे या इनका सरफेस एरिया देखोगे, इट विल कम एज 80 मीटर स्क्वायर. तो आपके लंग्स के जो एल्वियोलाई हैं, अगर हर एक एल्वियोलाई का जो सरफेस एरिया उसको ऐड कर दोगे, इट विल बिकम 80 मीटर स्क्वायर. इसका मतलब आप 100 मीटर का रेस दौड़ते हो, राइट? तो आप 80 मीटर का मार्क समझ सकते हो. 80 मीटर बाई 80 मीटर का अगर आप एक लैंड एरिया लोगे, उतना बड़ा होता है आपके लंग्स का एल्वियोलर सरफेस एरिया. समझ में आ रहा? सो इट इज ह्यूज. Okay, so the area is always huge for all the respiratory surfaces or organs. The surface area is always very, very high. Great. So this was all about the respiration. From the next video lecture we will start the transportation. Okay, and in transportation again we will see how oxygen and CO2 is transported in your body. Well, so this is it for today. Please, I would request all of you to take very good care of yourself. Okay, try to maintain the all possible ways of sanitizing yourself. Okay, keeping yourself safe and healthy. Great. With this, thank you very much. We will meet in the next video lecture.